Good morning and Jai Hind students. Today we are going to start with the Ohm's law. What is Ohm's law and how do you identify that yes, we are dealing with the Ohm's law. So Ohm's law is a basic law of electricity which say that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. मतलब अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसका एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन थ्रू दैट कंडक्टर will directly be proportional to the applied potential difference across the two ends when physical conditions such as temperature, mechanical strain remains the same. That means आपको किसी भी physical condition को change नहीं करना है. That means you don't have to change the shape and size of the body of the conductor. You don't have to change the temperature of the room surrounding or whatever the experiment you are conducting or whatever the observation or consideration you are taking into. That means no physical condition changes. So the amount of current that flows through that conductor will be directly proportional to the applied potential difference. It could be written as I is proportional to V or V is proportional to I. To remove the sign of proportionality, we just apply a constant that is known as resistance. So our equation becomes V is equals to Ri. It is the equation by which you can find the applied potential difference. If resistance and current is given, you can find the amount of current. If potential difference and resistance is given, also you can find the resistance if potential difference and current is given. So this Ohm's law has a very significant role in electricity, and further you will study this in your class 12th, but for in class 10th there is it has only this value, that is V is equals to Ri. It has a experimental value, also experimental setup which you have to perform in your physics lab. So all are hoping to reopen the schools as soon as possible. Government is also trying, we are also trying, but till then if you are not able to perform the experiment, then just believe my words. I will show you in the physics lab that the graph of the Ohm's law will be of linear in nature, which is drawn here in front of me on the screen. और जो इसका सेटअप होता है उसमें आप करते क्या है कि आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक बैटरी लगाई, सेल बैटरी whatever you want to say, applied a K switch, you just applied a resistor R across the end of that resistor. Resistor means conductor जिसका रेजिस्टेंस R है, और अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है. क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर करने के लिए आपने एक अमीटर लगाया विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, एंड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस यू अप्लाइड अ वोल्टमीटर across the ends of the conductor in parallel format. So this is the basic setup of the Ohm's law experiment. Now moving further, what do you mean by the resistance? The resistance of a conductor is opposition offered by the conductor to the flow of electric current through it. जब भी किसी कंडक्टर से आप करंट का फ्लो कराते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉपर्टी कि वो नहीं करेगा कि सर हमसे पास मत कराइए करंट, हमसे पास मत कराइए करंट. तो वो जो रेजिस्टेंस, वो जो अपोजिशन ऑफर करता है, दैट अपोजिशन इज़ नोन एज रेजिस्टेंस. क्लास 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनर्शिया का, तो वहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि ये फिजिक्स का मैकेनिकल पार्ट है. दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स आप लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और बॉडी जो रेजिस्ट कर रही है, दैट द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी इज़ नोन एज इनर्शिया. बट यहाँ पर जब आपकी कंडक्टर की बात है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो ऑफरिंग दैट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी
or they are opposing the flow of charges through them. I just want to create the analogy. जो वहाँ पे inertia था वही यहाँ पे resistance है. That is the resistance. And resistance in terms of physical features of the conductor, that how much resistance can a conductor offer. अगर मैं इस पर बात करूँ तो I will say कि resistance is directly proportional to the length of the conductor, and the resistance is inversely proportional to the area of cross section of conductor, which means that एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली डिपेंडेंट है. आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज़्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. आपने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया, आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. आपने लेंथ कम कर दी, दैट्स मीन्स कंपैरेटिवली उसकी आपका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा. बट देयर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ऑल्सो. दीज आर द फिजिकल फीचर्स, दैट length of the conductor and area of cross section. These are the physical features. You can just manipulate them. Whatever the length you require, you just go through it. तो आपने लेंथ को मैनिपुलेट कर लिया. लेकिन कुछ चीज़ें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. जैसे इफ़ यू हैव अ वायर ऑफ कॉपर एंड अ वायर ऑफ स्टील, अनदर वायर ऑफ सिल्वर, so there is a some difference between a steel wire, copper wire and a silver wire. तीनों में कुछ तो प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है. दैट मीन्स द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटीरियल also depends on the nature of the material and do not on the geometrical dimensions of the conductor. This property is known as resistivity. That means resistivity depends upon the nature of the material, not on the symmetrical dimension of the conductor. It is the property. And resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. That depends on the nature of the material too. Both the resistance and resistivity vary with temperature. If you have to vary the resistivity, just change the temperature. You will see the another phenomena. Because at different temperatures, material behave different quantity. This you will study in your higher education when you solely study about the material science. There is another subject completely. Unit of resistance is ohm and the symbol is ohm. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be of 1 ohm. SI unit of resistivity is ohm meter. What do you mean by the conductance and conductivity? Here earlier you have just heard about the resistance and resistivity. Resistivity and resistance was nothing but the opposition of earth. तो conductivity just उसका opposite हो जाएगा कि कितना वो अपने आप से पास होने दे रहा है करंट को, चार्जेस को. दैट कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. दिस वाज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ व्हाट वी हैव डन. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी ओम्स लॉ. नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, some basic numericals which are given in your NCERT books, which are given in your LC, which are given in your NCERT exemplar book. Just try to solve them. You will find an amazing value. और इसके बाद आपको करना क्या है, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमें सीखना. दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग. तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर आप जरा होमवर्क करिए. व्हेन यू डू होमवर्क ऑन रेजिस्टेंस you will amaze to see the results. Amaze that if the same amount of potential difference is applied, then we can draw a different amount of current. कभी कभी बहुत छोटे करंट निकालेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा करंट निकालेगा. हाउस होल्ड सर्किट्स में आपको पता चलेगा कि आपने ढेरों न्यूमेरिकल लगाया और सब जगह 220 वोल्ट 220 वोल्ट्स के बारे में ही वो बात कर रहा है. बट द अमाउंट ऑफ करंट इज़ ड्रास्टिकली चेंजिंग if you apply a electrical heater, if you apply a blower, if you apply a simple mobile charger, that will give you an amazing result. Just try to find that, analyze them, and we'll meet in the next video. Till then, thank you and Jai Hind. I was your physics teacher.
Thank you.